Hello, hey everyone, welcome to Sleepy Radiology classes. And I promise it will be easy for you. Quick personal radiation monitoring device. So far you have seen and we know about how we have to do radiation protection in a department and why it is very much necessary. So today we are going to see what are the monitoring devices we have. So before going to that, always keep in mind that monitoring devices will just monitor the amount of doses you have received, and that will be measured in the value of millisievert. So where we have heard about the sievert, we have heard about the sievert in our radiation unit topic. So, and it is going to give us what? Effective dose or equivalent dose. It is going to give us the equivalent dose, that is whole body dose as well as the type of radiation. So keeping in mind is that monitoring devices will just monitor the doses. It will not allow us to save from the harmful doses of radiation. So these are some examples of monitoring devices. This is flame batch, and this is the TLD monitor which we are using nowadays. So before going to our main topic, we want to know what is radiation monitoring. So monitoring is a, a step which we mainly do in radiation areas to measure the doses of radiation. And how we do is we are using the dosimeters. So we have various types of dosimeters. So dosimeter is the one who is measuring the doses of radiation. How we are going to ensure it? So we are ensuring it for both personal purposes also as well as for area purposes also. So when we are talking about the personal purposes, that is means entire community, entire peoples, we are thinking on that. So there is two terms. Sometime in interviews it is asked, what do you mean by personal and personnel? Personal means self and personnel means everyone. And for area means entire area we are going to survey whether there are or how much there are doses of radiation. To ensure such kind of safeties, this is not only for the departmental staffs, it is also for the patient as well as for the publics and test society we are going to keep in our consideration. Next is all these things are regulated by Atomic Energy Act 1962, and it is a mandatory part for radiation protection rules 2004. And to be frankly, now we are following the ICRP guideline 2017 113. Next is it was initiated in India in 1975, and Bark was the first to take the initiative for bringing the personal monitoring device, that is TLD batch, in India for protection purpose. Next is coming to the various types of monitoring devices. We are dividing them into two types. One is personal monitoring, means self, and area monitoring, entire area. So personal monitoring, we have first the film batch, then we had the TLD batch. Next we have for instantaneous doses, we are having the pocket dosimeter, which gives you instant dose of radiation. And we have newly we have the OSLD, optically stimulated luminescence dosimeter. Next is coming to the area monitoring devices. We had ionization chamber. Next we had the GM counters, scintillation detectors. Recently we are having on market is MOSFET and gap chrometers. So talking about the personal monitoring devices, it is mainly designed for personal use. Means it will be used for personals, not for area purpose, and it is only limited to one person only. Next thing is you cannot give this device to other persons for use also. If it is for you, means you have to only use this one, you cannot share with other person. Next thing is it is mainly designed to measure the occupational absorbed dose. So whatever doses you are receiving during occupation, means when you are working in the department, that is the main purpose of these devices, and ensure that this device also ensures that your doses are within the limit. And for this reason we are having measurement in quarterly methods. It's like 3 months, 4 months, 6 months, like that. Next is it trends also to give you a safe work practice, as well as that this area doesn't have much doses of radiation. This also keeps in mind. And in India it is mainly monitored by personal dosimetry and dose record section, D RPAD CT and CRS billing of Bark Anushakti Nagar Mumbai. So it is mainly इसका जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो कौन है? हमारा पर्सनल डोसिमेट्री एंड डोज रिकॉर्ड सेक्शन, जो बार के एक सेक्शन मतलब एक सेक्शन है जो इन डोजेस को फॉलो अप करते हैं रिगार्डिंग रेडिएशन सेफ्टी एंड यूजेस. नेक्स्ट इज
Bark is just controlling from behind, and Bark has aggregated some companies, some laboratories to look on the thing, and they only do the processing and as well as those calculations. So they are like Avantech we have for South India, we have Rantech for North India, Ultratech for eastern and northeastern parts, and these are the various laboratories who are given permission to provide personal monitoring services, dose measurement calculations, everything all over the India, and they are directly reporting to Bark. Next thing is why we require criteria for ideal devices are, we have to keep in mind that our devices should give us instantaneous report, मतलब जल्दी report देना चाहिए. Distinguish between the different types of radiation, various types like whether it is alpha, beta, gamma or x-ray. So this thing also it should keep in mind. Next is to detect the energy levels, whether it is low energy or high energy level, that one also it should have the criteria. It should be light in weight, easy and for use, and it should not be expensive also, and it should handle the conditions like heat, humidity or pressure, and unaffected by non-ionizing radiation. So as we are also having MRI and ultrasound non-ionizing zones, this thing also you should keep in mind. So these are the various categories of personal monitoring devices we are using. We are using film batch, and that is mainly for X-ray, beta and gamma radiation, and it ranges from 0.1 to 1500 millisievert doses it can measure. So ये हाई रेडिएशन भी मेजर नहीं कर पाते और बिलो रेडिएशन भी मेजर नहीं कर पाते, बट एक क्राइटेरिया इसका है कि it is very much good for permanent record also. Next thing is we are having the TLD batch, which is mainly for X-ray, beta and gamma radiation, and this is having from 0.01. So that means it is capable for measuring the low doses as well as the high doses, but permanent records we can't do. Once you are hitting the batch, automatically the doses gets removed. Next thing we have the OSLT recently launched machine. Unless and until you hit it with laser light, the doses will be recorded, and this is also capable for measuring X-ray, beta and gamma rays, as well as we can measure the low and as well as high radiation also. Next thing we have the pocket dosimeter, and it is giving you the very good, it is very much useful for getting the instant doses. So this thing is mainly used in for measuring the instant doses of any procedure, like whatever procedures you want to do in bedside also it is very helpful. It is used for research works also, as well as it is used for calibration purposes in our quality assurance purpose. So mainly in quality assurance we are not using the other three devices, but we are using only the pocket dosimeter. Next thing is we are going to move to the flame batch, and flame batch is the first personal monitoring batch launched in the radiation area and radiation field. So you can keep in mind, now we were so far knowing that film was a device to record the image, but now you can say film is also a device which is simultaneously recording the image as well as it is used for रेडिएशन मॉनिटरिंग पर्पस ऑल्सो. तो जो फिल्म बैच था, फिल्म तो फिल्म का मतलब क्या था, वो एक डिवाइस था जो इमेज को रिकॉर्ड कर रहे थे हमारे रेडिएशन एरिया में. बट अभी आपको क्या और एक फंक्शन मिल गया है कि जो हमारा फिल्म बैच है, फिल्म जो है वो दूसरा उसका काम है कि वो एक्सटर्नल डोज मेजर करने में भी हेल्पफुल होते हैं. और ये जो फिल्म बैच है, इट इज़ मेनली यूज फॉर इंडिविजुअल पर्पस, मेनली टू रिकॉर्ड आवर एक्स-रे, बीटा एंड गामा रेडिएशन एज वेल एज थर्मल न्यूट्रॉन्स ऑल्सो. और इस फिल्म बैच का क्राइटेरिया क्या है, it has a packet loaded with film. So this is the film, and mainly we are using the IOPA film, intraoral periapical small films, and this is loaded on the plastic cassette holder which is made up of stainless steel. So you can see it in the film, this is the film and this is the film batch holder. And the criteria of this batch is it is having both metallic filters on the both sides. So these are the filters, and the film is sandwiched between the two filters to record the images. Side by side this is having a clip also to hold for the patient, for the staff's users. And this film batch is of three types, one may be chest, wrist as well as head holder. So this flame batch is using for each measurement it requires dark room. So this is also one of the disadvantage, that it requires dark room, as well as the film when it is exposed to any kind of temperature. अगर ये किसी टेम्परेचर, जैसे कि अपने बहुत दिनों तक फिल्म को स्टोर करके रखा है तो उसमें क्या आ जाता है, फॉग आ जाता है. तो ऐसे ही सेम हमारी इस फिल्म बैच का जो रिकॉर्डिंग था उसमें फॉग आ रहा था. ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हीट, प्रेशर सब कुछ के साथ उसका इफेक्ट हो रहा था. साथ ही साथ ये जो डिवाइस है उसके लिए डार्क रूम भी चाहिए फॉर प्रोसेसिंग. और इसके जो रीडिंग्स होता है हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा डोसीमीटर, जो डेंसिटोमीटर होते हैं उसी से मेजर करते हैं. डेंसिटोमीटर का पर्पस क्या है, टू मेजर द डेंसिटी. तो फिल्म बैच में क्या होता है, जितना
आपका रेडिएशन लगेगा उतना फिल्म ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, तो द फिल्म विल बिकम मोर ब्लैक. दैट मीन्स द मोर द फिल्म is black, the more the radiation dose you have received. So how you are going to measure the this blackness? So we know the density is a thing to measure the blackness. So same thing in film batch, we are using darkroom technique to process the film. और जो रीडिंग होता है उस रीडिंग को मेजरमेंट करने के लिए वी आर यूजिंग द डेंसिटोमीटर. मोर द ब्लैकनेस ऑफ द फिल्म, मोर विल बी द डोजेस रिसीव टू द स्टाफ. सो दैट वाज the main thing of film batch. And the thing is it can be measured up to 0.2 millisievert of doses. And this film batch has two films are rolled at a time. तो आप जब film batch यूज़ करोगे तो क्या करोगे, आप दो फिल्म्स एट अ टाइम लोड करोगे. वन होगा आपका स्लो फिल्म, अदर होगा फर्स्ट फिल्म. तो जो स्लो फिल्म होता है वो मेनली मेजर करता है हाई एक्सपोजर लेवल, और जो फर्स्ट फिल्म होता है वो मेजर करता है आपका लो एक्सपोजर लेवल का. नेक्स्ट थिंग इज the thing is this film batch is having six filters. First one is the open window, and open window doesn't have any kind of filter. Next thing is we are using the plastic, and plastic is mainly to measure the beta rays. Next we have cadmium. So cadmium mainly to record the thermal neutrons. We have thin copper, thick copper to record our gamma radiations, and lead to record the x radiations. And keeping on mind is the thickness of each filter is 1 mm thick, and only the thick copper and thin copper is having the thickness of 0.15 mm thickness. So moving on, this thing is advantages permanent record you can have. but the thing is the film cannot be stored for a long term. जो film है वो हम ज़्यादातर store नहीं कर सकते, और उस measurement को measure करने के लिए हमको we need dosimeter. So this, with all these disadvantages, we are moving to a new device, and that is my thermoluminescent dosimeter. So unless and until you are hitting it with any kind of heat, thermal, your device will not get missing of data, means loss of data will not happen unless and until you are hitting it with any kind of heating devices. So that is the thing is that, and it can withstand also high pressure, chemical, and sensitive to light also. So that makes it a very good, as well as we doesn't require dark room. इसमें dark room की ज़रूरत भी नहीं है. तो with all these disadvantages we have moved to the TLD batch. तो TLD का मतलब है thermo heat luminescence, means one emission of light dosimeter. So this thing is that when you are going to hit the disc, that time only it is going to emit light luminescence, and it is going to produce the, और इट इज़ गोइंग टू गिव यू द रिकॉर्ड्स. तो समझ में आया. टीएलडी मतलब है थर्मो ल्यूमिनेशन डोसीमीटर. तो थर्मो मतलब हीट. जब भी आप इस टीएलडी डिस्क को हीट करोगे वो लाइट इमिट करेगा, और वो लाइट विल बी कन्वर्टेड टू सिग्नल्स, और वही सिग्नल्स हमें बता देगा कि कितना एक इंडिविजुअल ने डोज रिसीव किया है. तो मेनली कमिंग टू द टीएलडी बैच इज मेनली यूज्ड नाउअडेज इन इंडिया, एंड दैट इज वी आर यूजिंग द CaSO4 calcium sulfate discs only. And this is very much useful for measuring the doses of X-ray, beta, as well as gamma radiation also. So that is why we are saying TLD badge is not only used for personal monitoring devices, it is also used in our radiotherapy areas to measure amount of doses received to eyes, how much dose have penetrated the patient body. So that is also helpful for them. Next thing is still now there is no record that due to huge climatic condition any fade of records. So that is very much useful for us also. And coming to the parts of TLD badge is made up of a plastic, so highly impact plastic with a nickel coated discs are there, and it consists of two parts. One is a TLD card, and another one is my, so this is the TLD card, another one is my TLD cassette, and this is the TLD cassette. So coming to the TLD cartridge, it is made up of 3 CSO4 is to Teflon discs, and dipsium is the activator who activates once it is used for processing. जब भी वो process करते हैं तब जो डिप्शियम है, डिस्पोजियम है, वो एक एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, और इसका जो थिकनेस है वो है 0.8 mm थिकनेस, और उसका डायमीटर है 13.2 mm डायमीटर. और इस डिस्क में मेनली 3 डिस्क होते हैं, D1, D2 और D3. and and this disc is enclosed in a black color wrapper, and the wrapper is mainly has
the personal data written. So this will be the front side of the wrapper, and that another will be the back side of the wrapper. Mainly it displays the personal number of the um, user, and the thickness is 12 mg per centimeter square, and it can also measure the depth of 10 mm. So at least ये जो TLD का डिस्क है वो 10 mm डेप्थ तक वो मेजरमेंट कर सकते हैं। और मेनली इसका पर्पस जो रैपिंग का पर्पस है कि जब हम हैंडल करते हैं तब ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फ्लूइड या मिस हैंडलिंग से वो डैमेज ना हो जाए, तो दैट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द रैपर। सो दिस इज द TLD कार्ड। इट हैज 3 discs, D1, D2 and D3. So and this is the TLD holder and cassette, and this is having the clip, and the main purpose of the clip is to attach to the workers area of interest, like it may be chest. If you are using mainly in diagnostic level, like, so you can keep the limitation to chest. If you are working in nuclear field or any area where you are making the radioisotopes, you have to use additionally wrist, hand and head TLD batch also, because that's areas also coming in our contact. So coming to the TLD cassette, is the TLD cassette has three discs which are made up of, first disc is made up of three filters. So first filter is made up of copper plus aluminum, and it is mainly for recording the X-ray and gamma radiation. Next is the perpex window, it is mainly for recording our beta radiation. And finally is the open window, which records the all other types of radiation. So first is the copper plus aluminum, second will be the perpex, और third जो होता है that is the open window. So each discs are having some ratio, and that is around 1.5 mm thick. And the thing is, when you are planning for the first window, so the copper is placed near to the filter. So this is the aluminum filter will be there, I'll show you from inside. So copper will be placed next to it, and next we are going to put the aluminum. So copper is receiving the first high amount of energy, next the excess low energy is received by the aluminum. So first will be the copper, next will be the aluminum. So the thickness of copper is 0.9 mm, and for aluminum is 1 mm, and total thickness is 1000 mg per centimeter square. Next is um, the copper discs will always be near to the disc area, that is this area, and the aluminum will be near to the filter area. So this is the face, this is the area which faces the radiation, and this is the disc area. So aluminum will be facing this direction, and the copper will be facing the, sorry, and the aluminum will be facing this direction. Next thing is, we are having the perpex window, and this perpex window is made up of thin plastic fiber, which is used to mainly record our beta radiation, and its thickness is 180 mg per centimeter square. Next thing is we have a D3, which is open circular window, and it is mainly to record the uh, small amount of other types of radiations. Next thing is, we have a clip attached to this area, and this clip is mainly to hold for the clothing or to the wrist area. And you have to keep in mind that the metallic, so this is the entire part of the so this is the card holder, this is the TLD card, and this is the batch from front view. And what we have to do is, once you want to open, is just slide this back side. You can remove this and put the card here, and again slide up back. But you have to make assure that the disc should be properly fitted according to the windows. Like this is the first window, this is the second window, and this is the third window. So this is the metallic window, this is the plastic window, and this is the open window. And D1 should be to the side of metallic window only, D2 should be in perpex, and D3 should be in open window. For maintaining this thing, we are having a V cut symmetry also, and this V cut is always kept to right hand side of you. So see, this is how they have did is, you have to take the discs, you have to slide it down. Once you have slide it down, so you can see this wrapper, you have to fold it very nicely, and you have to put it accordingly. So as I said is, there will be one filter. So this is the aluminum filter. So when you are taking the when you are thinking of the metallic window, copper is facing to what, copper is facing to our disc.
Okay, so this is the disc area. So this side the copper will be facing and aluminum will be facing to my radiation area. So this is the radiation area, and this thing is also made up of aluminum. Okay, so you can see here, this is the back side, this is the front side. So this is the disc area where copper will be fixed place facing, and this is the radiation facing area where the aluminum will be faced. So next thing is we are moving to how the TLD works. So we know about something called as valence bond and conduction bond. So once the X-ray comes, so this is how X-rays are coming, and it will strike on the valence bond area from, and this area will have all the ground state electrons. So this ground state electrons from this valence bond area will jump to the conduction area, creating a free area, and this is called as the forbidden zone. So this is, and this will create a whole pair. So from valence bond the electrons will jump to the conduction area and will get trapped. Why? Because they are getting activated, and who was the activator we are using is dy. We are using the activator. Next thing is, once you're hitting the filament, what happens is, once you're hitting the discs, what happens is this electron from the conduction band will again try to return to its original state, releasing some excess energy, and that excess energy is what is the information. So again I am saying is, the electrons, what happens is they are staying in the ground electrode. Once X-ray falls on the disc, this electrons from the ground state jumps to the conduction area and they get trapped in the conduction area. ये conduction area में trap हो जाता है. तो ये क्या होता है कि इसका अगर energy +1 है, जब X-ray आता है तो क्या होता है, वो energies को absorb करके वो बन जाते हैं +2, और +2 होके वो excited states में चला जाता है ऐसे. तो एक्साइटेड स्टेट से जब दोबारा आप इसको ग्राउंड स्टेट में लाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको किसी न किसी एक्सटर्नल चीज से इसको हीट करना है. इट मे बी लाइट, इट मे बी हीट. सो व्हाट वी आर डूइंग इन टीएलडी इज वी आर हीटिंग इट. So once we release the heat, this electrons, what happens is they remove the excess energy, and this again comes to the ground state with its original energy, and this excess energy is emitted as a. तो एक टीएलडी X-ray. कैसे अपना प्रोसेस रीड आउट करता है, तो वो करते हैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ टीएलडी रीडर. सो जितने भी डोजेस आप रिसीव करते हो, तो वो क्या होता है कि जब भी एक्सरे आपके टीएलडी डिस्क में पड़ता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट से क्या हुआ था, एक्साइटेड स्टेट पे चला गया है. तो अब क्या करेंगे, तो हर 3 महीने के बाद इसका रीड आउट प्रोसेसिंग होता है. तो 3 महीने, हर 3 महीने के बाद इट इज सेंड टू द एआरबी और टू द लेबोरेटरीज. तो उस लेबोरेटरी में आपके डिस्क जो है उसको टीयर करते हैं. टीयर करने के बाद वहाँ से हर डिस्क को निकालते हैं, और एक रीडर होता है, देखो ये जो रीडर है उसी में डाल देते हैं. तो ये जो रीडर है उसी में वो डिस्क 1 बाय 1 डाल देगा. डाल देने के बाद क्या होता है, इसी को हीट अप करते हैं, और वो हीट अप करने से क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन अभी एक्साइटेड स्टेट में था वो ग्राउंड स्टेट में आ गया है, और ग्राउंड स्टेट में आने के इस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो इमिट, एक लाइट इमिट करते हैं, और वही लाइट क्या करते हैं, पीएमटी के थ्रू रिसीव होता है, और रिसीव होने के बाद वो एम्पलीफायर में चले जाते हैं, और एम्पलीफायर से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक से कन्वर्ट हो जाते हैं डिजिटल सिग्नल में, और फाइनली जो इमेज होता है वो रिप्रेजेंट कैसे होता है, एज अ ग्लो कर्व. So this is how the images are represented, and it is represented as a glow curve. So you can see here, so this is how, this is the reader. They put the disc here, they heat it up, and with the help of computer technology they can receive the images in the form of glow curve. So this is how it is received. So this is all about, we place the disc, it gets heated, it tries to emit light, and this light is received with photo multiplier tube, who converts one light photon into multiple light photons. Next thing is, it is located on the amplifier, and amplifier converted into electronic signal, and finally it is given to the computer, where the computer converts into digital signals and display it to you as a glow curve. Okay, next thing is, cut off the values of TLD batches. एक रेडिएशन वर्कर के लिए मैक्सिमम डोज लिमिट क्या होना चाहिए, 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर, बट नॉट मोर देन 100 मिलीसीवर्ट. दैट इज अ रिकमेंडेशन बाय एआरबी. फॉर प्रेग्नेंट लेडीज हु आर वर्किंग इन द रेडिएशन एरिया, उनके एब्डोमेन में एक स्पेशल बैच लग जाएगा फिटर्स मॉनिटरिंग के लिए. तो वो है 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. पर ईयर नहीं होगा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होगा. और दोस्तों वर्किंग न्यूक्लियर मेडिसिन, उनको है 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर. जो नॉन रेडिएशन वर्कर्स है और प्रेग्नेंट लेडीज है, उनको 2 मिलीसीवर्ट
पर ईयर। और फॉर पार्शियल जो बॉडीज मेजरमेंट कम करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं फॉर सर्वे एंड रिसर्च पर्पस, एक्सट्रीमिटी में मैक्सिमम 500 मिलीसीवर्ट होना चाहिए और लेंस में 150 मिलीसीवर्ट। अगर लेंस में ज़्यादा रेडिएशन लगेगा तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ कैटरेक्ट टू। नेक्स्ट इज ओवरडोज का रिपोर्टिंग होता है कि चेस्ट में अगर आपका डोज टीएलडी मेजरमेंट में आपका डोज 10 मिलीसीवर्ट के ऊपर आ गया क्वार्टरली, तो यू विल बी recorded as receiving high exposure dose, and then ARB will send you letter to your department, to your RSO, and individually to you also, that you should take precaution as you are receiving मोर डोजेस। तो बात यह है कि अगर आपने ज़्यादा डोज रिसीव कर लिया है, मतलब एक चेस्ट रीजन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिलीसीवर्ट ही मिलना चाहिए 3 मंथ्स में। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपके ऊपर तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि इसका रिपोर्ट जो है वो आपको एज वेल एज आपकी इंस्टीट्यूशन को, आपके आरएसओ को भी भेज दिया जाएगा, एज वेल एज आपको तुरंत ही उसी डिपार्टमेंट से हटा दिया जाएगा टू अदर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एरियाज, जैसे कि एमआरआई हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है। और वैसे भी साथ ही साथ आपको रेडिएशन जो सिक लीव है 15 डेज का विथ पे, वो भी आपको कंपलसरी हो जाएगा। बट ये सब चीज़ें दे विल कंफर्म विथ द यूज ऑफ लाइक यू हैव टू अंडरगो chromosomal test, you have to undergo blood test, and they will check whether you have intentionally exposed the batch, और आपने इंटेंशनली इसको एक्सपोज किया है या वाकई में आपको लगा है। इस सारे चीज़ें का जज होगा, फिर जाके आपको आपको आप एप्लीकेबल होगे रेडिएशन सिक लीव के लिए। तो ध्यान में रखना कि आपका डोज जो है वो 10 मिलीसीवर्ट के ऊपर ना जाए विद इन 3 मंथ्स, और जो रिस्ट एरिया है उसमें 250 मिलीसीवर्ट के ऊपर ना जाए। और बेसिकली जो व्यू जो अगर आपके वैल्यूज़ 0.05 मिलीसीवर्ट के नीचे होते हैं तो बेसिकली आपके जो रिपोर्ट होते हैं उसमें ज़ीरो बन के आते हैं। तो 0.05 के नीचे होगा तो ये नॉर्मल है, और बेसिकली 0.09 मिलीसीवर्ट हो जाता है तो they give a warning and it shows as 1. Next thing is TLD batch आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? We are using mainly in the head areas, in chest areas, in abdomen area, but when and wrist and in the fingers. So wrist, finger and head is mainly for nuclear medicine department and those are working in the radioisotope areas. And when you are using the TLD batch, it should be below the lead apron, बिकॉज लेड वी हैव टू रिकॉर्ड कि लेड एप्रन पहनने के बाद आप कितना प्रोटेक्ट कर रहे हो, और लेड एप्रन से कित प्रोटेक्ट होने के बाद कितना आपके अंदर डोज आ रहा है। तो इसलिए हमेशा जो टीएलडी बैच है वो लेड एप्रन के नीचे पहनना है, ऊपर नहीं पहनना है। नेक्स्ट थिंग इज जो आज का एक मेन इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का है कि हमने बताया था कि जो पेशेंट जो इंडिविजुअल का रिकॉर्ड होता है वो डिस्प्ले होते हैं इन द फ्रंट साइड। तो इस डिस्प्ले का कुछ रीजंस है, जैसे कि देखो ये जो नंबर है 084616, 6 डिजिट का नंबर है, दैट इज़ द इंस्टीट्यूशन नंबर, मतलब हॉस्पिटल नंबर हो सकता है, इंस्टीट्यूशन अगर है तो इंस्टीट्यूशन नंबर है। तो ये हमेशा हर पर्सन के लिए सेम रहेगा फॉर सेम इंस्टीट्यूट। और जो सी है, सी के बाद जो नंबर लगता है 0002, दैट इज़ योर पर्सनल नंबर। तो हर इंडिविजुअल का अलग अलग नंबर होगा। मानो कि मेरे पास एक हॉस्पिटल है एक्स, तो उस एक्स हॉस्पिटल का इंस्टीट्यूशन नंबर है क्या 084616। तो दैट इज़ इस नंबर से मैं समझ जाऊंगी कि ये जो बैच है वो इसी इंस्टीट्यूशन एक्स इंस्टीट्यूशन का है। और सी से पता चल जाएगा कि अगर मेरे उस इंस्टीट्यूशन में 10 स्टाफ है तो स्टाफ ए का है 1, स्टाफ बी का है 2, तो ये जो 2 वैल्यू है वो स्टाफ बी का है। प्लस प्लस क्या होता है कि आपका जो नेम है वो डिस्प्ले रहेगा, उसके बाद आपको आपका टाइप ऑफ रेडिएशन रहेगा, गामा एक्सरे का रेडिएशन डिटेक्टर है या गामा एक्सरे का है, गामा बीटा का है, वो डिस्प्ले रहेगा। साथ ही साथ टाइम पीरियड रहेगा, जैसे कि देख सकते हो आप जुलाई टू सितंबर 2017, और कौन सी कंपनी का दिया हुआ है ये भी डिस्प्ले रहता है। सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन नो व्हाट द फ्रंट मार्किंग और फ्रंट राइटिंग इन द wrapper means to you. So this is what is all about the TLD batch. Next thing is I will have a short note how you can measure your doses. So first thing is now everything, if you want to institution registration, तो आपको इलोरा पे जाके आपका इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ ही साथ एक इंडिविजुअल का भी इलोरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है आफ्टर 2 years completion of the job and having the 2 years experience certificate in proper radiation field.
Next thing is so you have to go to Ultratech and Rentec or Evantech, any companies, and you can download the from there to apply for TLD. There will be some charges like 600 plus GST 180, so around 780 charges will be there. So it will be 1 year charges. After 1 year again you have to do registration, but that time you don't need to have to pay for the GST, and no need to pay sorry, not, you don't need to pay for the new batch charge, न्यू होल्डर चार्ज, ओनली द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन यू हैव टू पे. तो ये जो बैच है इसका जो रजिस्ट्रेशन है, तो आप अल्ट्राटेक, एवांटेक या जो रेंटेक है उसी से कर सकते हो. तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पर आप you have to place your picture. Okay, next thing is if you're Elora user, you can mention the Elora name. Next will be the institution number, so like 01753 is the institutional number. That one, for this one you have to confirm with your RSO. They will be knowing what is the institution number you have, your personal number, all these things will be fill up by the official purpose. Next thing is name of the name and address of the present institution. So you are going to mention like um, Stanley Medical College, Chennai 06182. So that is the address and name. Next you have to write your full name like S Rai. So this is my full name. Next thing is you have to write about the initials, like what initials you mention. Next you have to mention your father's name, your date of birth, what gender you are, and your place of birth, and mention the state here. Next thing is you have to mention your qualification, if you have done graduation, post graduation, and all these things. Next you have to mention the designation, what's your designation. So basically for radiographers we select the radiographer designation. For physicists they will select the medical physicist. For radiologist they will select the radiologist. So on so on. If you are trainee you have to mention the trainee. Also I have seen as per my survey कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग के टाइप पे टीएलडी बैच प्रोवाइड नहीं करते हैं. सो आई नॉट मेंशन द नेम्स, बट दोस आर सीइंग द वीडियोस, प्लीज डू कीप इन माइंड दैट ट्रेनीज आर आल्सो एक्सपोज टू रेडिएशन. प्लीज प्रोवाइड देम द trainee TLD batch too. It is very much mandatory. Next thing is those who are working in diagnostic level, they only will mention the diagnostic area, and others can mention the areas whatever you are working. So basically the batch we are giving for diagnostic level and nuclear medicine areas and radiotherapy, so you can mark accordingly. Next thing is if you are going to mention what type of employee you are, regular, casual, or consultancy as per your type. Next is you are going to mention the type of TLD. You have to mention the Aadhaar card number if you are having the batch. So basically diagnostic radiographers will only mention for chest TLD, and those who are working in nuclear medicine and radiation area, they are going to mention all the three: chest, wrist, and as well as the head, for head purpose also. Next thing is if you have worked in any other places before having joining to new institutes, so you have to mention your previous area. If you are from foreign, you have to mention from foreign. You have to attach your dose certificates also if you have that. So dose certificates you will be getting from your RSO, and it's a right for every radiographers to गेट द डोजेस. जो हर रेडियोग्राफर है उनका राइट है कि मैं आपको RSO से मांगना आपका डोज रिपोर्ट क्या है. इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. और ध्यान में ये भी रखना कि हर 3 महीने के बाद आप जो आपके डोज, आपका जो TLD बैच है उसको चेंज करवा लीजिए और आपका डोज रिकॉर्ड भी जान लीजिए. और जो आप न्यू ज्वाइनीज है या ट्रेनीज है किसी भी रेडिएशन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो, तो तुरंत ही आप उन इंस्टीट्यूशन के जो RSO है या डिपार्टमेंट स्टाफ है जो हैंड लुक ओवर कर रहा है, उनको बोलिए कि तुरंत ही आप लोगों के लिए TLD बैच का इंतजाम कर ले बिफोर गोइंग टू ट्रेनिंग. सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ नॉट, प्लीज डू राइट टू ARB. They will take the action on that. नेक्स्ट थिंग इज अगर आप इंडिया से हो तो मेंशन इंडिया, कहाँ काम किया है उस जगह पे. अगर कोई प्रीवियस बैच है तो उस बैच का नाम लिखिए, इंस्टीट्यूशन नंबर लिखिए. और एक बात ध्यान में रखिए कि whenever you are working in any field and you are changing the institutes, please do keep in mind what is the institution number and what is your personal number, so that when you are going for new batch you can write this thing also. Next thing is duration of work, कब से कब किया है और previous institution का नाम क्या है. So this is all the formalities how you have to follow. Next thing is lastly you can see the declaration area. So you have to mention your name,
and your signature, and you have to get signed from the RSO, and RSO should mention his name, and you have to get the sign from RSO as well as from the head of the institution. So this is how you have to fill that TLD form. I think this will be very much helpful for you. Next thing is, this is all the accreditation records. We have Avantech in Andhra Pradesh, and this is her contact number. This is Avantech from Maharashtra. This is the contact number. This is Ultratech for all other states of Northeast and Northern. So this is the number, and this is another for all defense institutes countries, that is from Jodhpur. So this is all about the TLD providers. So that is all about the TLD batch. But before leaving this session, I just want to mention you that whenever you are using TLD batch, do keep in mind that it is only for you, and don't allow other users to use your batch, because then it will cause an hamper to the record. उसके बाद TLD बैच सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, डार्क रूम असिस्टेंट्स है, स्वीपर्स हैं, उनको नहीं देने की ज़रूरत है. सिर्फ आप, आपका रेडियोलॉजिस्ट और जो भी बंदे रेडिएशन रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उन्हीं को ही देना है. सो उसके बाद TLD का जो बैच है, उसको मेन पर्पस रेडिएशन डोज मेजर करने का, तो आप सिर्फ रेडिएशन डोज एरिया या रेडिएशन एरियाज में ही इसको इस्तेमाल कीजिए. उसके बाद जो TLD बैच है, उसमें आप देख लीजिए एक बार कि आपका पर्सनल जो नेम है, नंबर है, टाइप ऑफ रेडिएशन है वो, और पीरियड ऑफ यूज़, लोकेशन जैसे कि चेस्ट या रिस्ट, वो सही तरीके से मेंशन करके या नहीं है. अगर नहीं है तो तुरंत ही भेज दीजिए. उसके बाद जो TLD बैच है, उसको कभी भी कोई हीट एरिया पे फर्नेसेस के सामने मत रखिए. उसके बाद जो TLD बैच होते हैं, उसी को अगर आपके पास डैमेज फ़िल्टर आया या जो फ़िल्टर है वो टोर्न आया है, पैकेट तोड़ के आया है, तो तुरंत ही उसको रिसीव मत करके भेज दीजिए. उसके बाद जो TLD बैच है वो हर जगह पे मत पहन के घूमिए. सिर्फ जब आप रेडिएशन रूम पे होंगे, स्कैनर रूम पे होंगे, जैसे कि एक्सरे रूम या CT स्कैन रूम, तभी यूज़ कीजिए, वरना उसको यूज़ मत कीजिए. जैसे डाइनिंग हॉल में या खाने जगह में, कैफेटेरिया में मत यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हीट उस जगह में पड़ जाएगा तो वो डैमेज का चांसेस रह जाएगा. फिर जो TLD बैच है वो हमेशा आपके लॉकर पे रखे जाइए, जहाँ वो सेफ़ है, सिक्योर है फ्रॉम हीट एरिया से, क्योंकि हीट जो है वो उसका रीडिंग को रिकॉर्ड को, जो रीडिंग का रिकॉर्ड है वो डिमिनिश कर सकता है. साथ ही साथ आप यूज़ करें या ना यूज़ करें, अगर आपको ऐसे कोई TLD बैच मिल गया है तो तुरंत ही वो ARB को या आपके जो नज़दीक वाले लैब्स हैं उन्हीं को भेज दीजिए. और आपके जो TLD बैच के कॉन्टैक्ट्स हैं वो आप कर सकते हो फ्रॉम अनुशक्ति नगर मुंबई, एज वेल एज जो आगे का दिया हुआ एड्रेस है उन्हीं पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. साथ ही साथ जो TLD बैच है वो आप किसी भी रेडिएशन एरिया में रख के मत जाइए, नहीं तो आपके जो डोज है वो भी बढ़ जाएगा, फिर आपको रेडिएशन से क्लिप भी नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर TLD बैच, एंड आई होप यू विल कीप इट all in mind. So here is a small video. I'll show you what is inside the wrapper, but it's an instruction to everyone. Please don't open this thing and do experiment by yourself. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मत करना, ये सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है. तो देखो, हमने रैपर को रिमूव किया है ब्लेड के साथ, और आप देख सकते हो इसके अंदर 3 डिस्क्स है. तो ये है D1, उसके बाद D2 और D3 है. तो और ये है पूरा जो D1, D2, D3 डिस्क हमारे TLD बैच का. तो प्लीज़ आप लोग ये डिपार्टमेंट में मत खोलिए इसको. तो जो D1 होते हैं वो इसमें मेनली कॉपर और एल्युमिनियम का सैंडविच रहता है फिल्टर का. ये D2 जो है वो मेनली फॉर किसका, बीटा रेडिएशन मेजरमेंट करने के लिए. और फाइनली जो D3 है उसका मेजरमेंट होते हैं फॉर अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन. सो ये थे हमारे 3 डिस्क ऑफ TLD. और ये है आपका TLD रीडर. तो इसमें आप देख सकते हो ये है मेन रीडर जो हमारा रीड आउट प्रोसेस करते हैं TLD का. तो अभी मैं आपको दिखाएंगे. यहाँ पर देखिए, अब हमने डिस्क को डाल दिया है प्लानचेट में और इसको लॉक कर दिया. उसमें से अब हीट निकलना शुरू हो जाएगा और हमने यहाँ पर रीड बटन प्रेस कर दिया है.
और फाइनली हमें ऐसे ग्लो कर्व जैसे रिपोर्ट मिल जाएगा. So that is a glow curve which gives you the report of the doses. So that was all about the TLD. I hope you have liked it, and special thanks to my one person who has requested me for